back to my YouTube channel Laws on Point. This is Advocate Suman Pata, and today I would be speaking about the topic cognizable offense and non-cognizable offense. The reason for making this video is because in my previous video I spoke about certain laws which every Indian should be aware about. There was a law which says that to lodge an FIR, it has to be a cognizable case. So in today's video, I would be explaining you what does cognizable and non-cognizable offense means. So before going further with the video, it is very important for us to understand what does the word cognizable means. So the word cognizable has come from the word cognizance, which means to have knowledge or notice. So for example, if a judicial officer is said to have taken cognizance of the offense, which means that before conducting trial or before framing the issues, the judicial officer has to apply his judicial mind to understand the facts and circumstances of the case with the help of report and other information given by the police officer. So taking all this information, taking cognizance of all the facts and circumstances, this would help him to understand whether the charges framed against the accused is correct or not. Now, why it is said that it's most important to take cognizance? Because if the one take cognizance, it basically helps the judicial officer to decide that later on, later part of the case, if it is found that the accused is completely not guilty, the charges framed against him are completely wrong. So in that case, somewhere it would harm the reputation of that person in the society. So it's very important to take cognizance of that. Now talking about cognizance of offense. So basically cognizance of offense means to be aware or to have knowledge of the commission of the crime held. So this cognizance of offense, this word is nowhere defined in CRPC. So it's basically apparently there's no certain provision or there's no certain amendment has done where this particular word is defined under CRPC. So now talking about the offenses. So these are two types of offenses described as cognizable offense and non-cognizable offense. So before I would be talking about cognizable offenses. So cognizable offenses are nothing but those type of offenses where a police can arrest anyone without a warrant. Yes. Now the question would arise, what does the word warrant means? So warrant is nothing but basically permission which the police officer has to take from magistrate before arresting anyone. अगर पुलिस ऑफिसर को किसी पर्सन को अरेस्ट करना है और वो भी कॉग्निजेबल टाइप ऑफ केसेस के अंदर, तो उन्हें वारंट की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई परमिशन कोर्ट से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा जाके उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं. अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या हैं, कौन से टाइप के ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट. सो ये ऐसे कुछ ऑफेंसेस है जिसमें पुलिस को कोई वारंट नहीं लगेगा, वो सीधा जाके अक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं क्राइम लोकेशन से. अब इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा कि द पुलिस ऑफिसर इज़ बाउंड टू रजिस्टर द FIR विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट. But before that, he has to conduct preliminary inquiry before registering FIR and later produce him in front of the magistrate. तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी जिसमें पुलिस ऑफिसर पूरे सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन जो क्राइम लोकेशन से ली गई है वो इन्फॉर्मेशन वो नोट डाउन करेंगे, उन सारी चीज़ों का एक बार इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद FIR लॉन्च होगा और फिर वो पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा. तो ये कुछ एक बेसिक नॉलेज हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में. अब मैं बात करूँगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में. तो non-cognizable offenses are the cases where the police has no right to arrest someone without warrant. Okay, so first they have to take a prior approval of the court before performing any kind of investigation or registering any FIR.
Now, offenses like forgery, assault, cheating, defamation, mischief, hurt, these all come under the category of non-cognizable, would be considered as non-cognizable. ये कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल केसेस में आते हैं या कौन से क्राइम नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जाते हैं? तो ये जानने के लिए हमें CRPC का बेयर एक्ट देखना होगा. This Bear Act is nothing but basically pro forma where all the procedures regarding the law is given. तो CRPC में एक लिस्ट दी गई है Schedule 1. अगर आप अपना बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसके एंड में स्केड्यूल्स दिए हैं. तो जितने भी स्केड्यूल्स है वो पीछे दिए गए हैं. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में स्केड्यूल 1 की बात करेंगे जो कि बात करता है IPC के बारे में. तो जितने भी स्केड्यूल 1 में ऑफेंसेस हैं वो IPC के दिए गए हैं. स्पेसिफिकली इंडियन पीनल कोड के बारे में ही बताया गया है. तो ये स्केड्यूल 1 कहता क्या है? व्हाट डज द स्केड्यूल 1 सेज? सो इफ यू सी स्केड्यूल 1, there are total 511 sections in IPC. So whatever offenses given under IPC are covered in Schedule 1. So we just can't simply assume that हाँ ये एक क्राइम है जो कि कॉग्निजेबल है, ये एक क्राइम है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है. ऐसा हम कुछ अज्यूम नहीं कर सकते. ये सारे डिटेल्स, इन सब के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन Schedule 1 में दिया गया है CRPC के. और ये एक जनरल मिथ हम सुनते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट्स. जब मैं भी एक लॉ स्टूडेंट थी तब मुझे भी ऐसा लगता था कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब बहुत बड़े ऑफेंसेस हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मतलब छोटे ऑफेंसेस. तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि मैं आज ब्रेक करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि ऐसा नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल, देर आर स्मॉल टर्म ऑफ पनिशमेंट इन कॉग्निजेबल केसेस. जैसा कि मैंने बोला, ज़रूरी नहीं है कि कॉग्निजेबल केसेस के अंदर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी बहुत बड़ा हो. छोटे इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंसेस भी हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई वुड बी कवरिंग सेक्शन 143 विच सेज दैट whoever is a member of a unlawful assembly shall be punished with imprisonment of 6 months, fine or both. तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 months पनिशमेंट है, लेकिन ये कॉग्निजेबल केसेस हैं. यहाँ पे पुलिस विदाउट वारंट जाके अरेस्ट कर सकती है बिकॉज ये अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड है. वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल वुड बी सेक्शन 304A दैट इज कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस विच सेज दैट whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act may be punished with an imprisonment of 2 years of fine. अगर आप कोई नेग्लिजेंट एक्ट परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से किसी को हर्ट हो रहा है या फिर उनकी डेथ हो जा रही है, तो इसके लिए सिर्फ 2 साल का पनिशमेंट है, लेकिन फिर भी ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कैटेगरी में आता है. तो ये बात हो गई छोटे पनिशमेंट के बारे में. अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म पनिशमेंट के बारे में जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में दी गई है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 193 विच इज फॉल्स एविडेंस विच सेज दैट whoever intentionally gives any false evidence or intentionally gives any fabricated statement in front of the court, that person would be punished with 7 years of imprisonment or 3 years of punishment, like minimum and maximum. So now we can see the difference. Though even this is a non-cognizable offenses, but still the punishment is too high. The punishment is on the higher side. So even in these all cases, police needs warrant to arrest those people. Now another example can be section 506 which talks about punishment regarding criminal intimidation. So it says that if you give any threat to someone for causing death or grievous hurt or impute the unchastity of a woman, so offense under this, so punishment can be 2 years or 7 years of fine. So here we can see that cognizable offenses doesn't require to have higher punishment, or non-cognizable offenses doesn't need to be having less punishment. ऐसा कुछ है नहीं. There's a myth which we have as a law students in mind. So to know all these information, everything is given in detail in Schedule 1 of CRPC. Now
In next thing I would be talking about is Schedule 2. There's a Schedule 2 also given, which basically अपार्ट फ्रॉम आईपीसी के अलावा भी और भी बहुत सारे ऑफेंसेस हैं दूसरे लॉज में जो कि कवर किया गया है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. सो स्केड्यूल 2 में एक छोटी सी लिस्ट बनाई गई है कि आईपीसी के अलावा और बाकी जितने भी लॉज हैं उनसे रिलेटेड, जो कि ये कहता है देयर आर टू थिंग्स गिवन इन दैट. The very first thing is, if the punishment is below 3 years, that would be considered as a non-cognizable offense. Okay, they have given a category of two things. If the punishment is less than 3 years, that will be considered as non-cognizable case, and if the punishment is more than 3 years or 3 years, that would be considered as cognizable cases. So for example, under section 66F of Information Technology Act, which talks about punishment related to cybercrime, so the offense given under that is life imprisonment. So obviously life imprisonment means obviously it's above 3 years, so that would come under the category of cognizance offense. So that's what is given under Schedule 1 and 2. Now I would giving a very quick revision, or can say a very quick difference between cognizable and non-cognizable case. Like, let's rewind and let's revise those all by saying that for cognizable offenses the police can arrest without warrant, and for non-cognizable case the police have to take warrant from magistrate. The second thing is FIR can be lodged in cognizable offenses, and in non-cognizable offenses non-cognizable report can be lodged. Investigation can be commenced without the order of magistrate in case of cognizable offenses, and in case of non-cognizable offenses an investigation can only commence after the order of magistrate. So these are some minor difference, but apart from this I have also prepared a PowerPoint presentation, which the link of which would be given in the description box below. So please have a look on it, and in case of any doubts or queries, please write in the comment box below and I'll be solving those queries soon. So that's all for today's video. In next video I would be talking about some other issues, some other matters, and yeah, that would be interesting for everyone to know about. So that's all for today's video. Thank you.